love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just don't be scared. That's how your morning starts, like with the exercise part and then with the breakfast as a normal? Yeah, I start my day with actually prayer. Okay. Then I take generally 4 glasses of water. Okay. And then 1 glass of apple cider vinegar water. And thereafter my day starts. I go for some or the other workout. Yes. Today it was our PT drill day. Generally Tuesdays are PT drill days and Fridays are parade days. If there is no exigency, then the parade and drills are organized. Okay. So sir, like I've seen that one of the healthy IPS officer. So like, is it being now habituated, or is it challenging sometimes to stay focused at this age, certain point of time? Age is not the matter. Matter is the engagements. Okay. You are generally very, very busy. Yep. Because and you have much. You are loaded with works. So taking out time for workout is sometimes difficult. But I believe in this philosophy, as I was already telling there, that Sarir Indriye Sattva Atma Sayogo. A person is successful only when his body, his senses, his mind and his soul is in unison, in the consonance or harmony. And then only you can perform your best, you can perform your duty best. So Sarir, the body comes first. And that's why I try to take out time as often as possible. And I enjoy doing that. Yeah. So it is a little difficult, but at the same time, because I know that this body can only make me fully able to perform all my duties. Sharir Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. The body is the paramount and first instrument to perform all your duties fully well. So like as of now we have covered like 7 to 8 states, and I'm glad to see that different sort of policing being performed in different states. So like I have seen that that very hectic schedules in UP policing, and sometimes in Manipur it's not being that hectic. So like you are also spending some personal time right now. When you're going to office, then it will be totally into that policing thing. Yep. How is the balance will you share for the upcoming bureaucrats, mostly in metropolitan cities when they are being posted?
I must tell them that you should have a mechanism Okay. of switch off and switch on. When you are doing one thing, you switch off the other thing. You are having your helps Yep. in the form of bodyguards, RTPCs, radio transmission police constables. They are. So, if there is an exigency, they will connect with you. But otherwise, whenever you work passionately. You give your full to the work. As in Bhagavad Gita, it has been rightly said that yoga karmashu kauslam. If you want to have the samadhi avastha or the fana avastha of Sufism, or if we want to have the unison with the God, that is the ultimate thing happens, then you have to perform your duties with utmost sincerity and utmost truthfulness. That is what an honesty and sincerity. So when you are doing your job, you do that fully. When you are working out, you put in yourself fully in that. When you are pursuing your hobby, you should pursue your hobby with full passion. So like as of now, it's been 24 years in the profession. Yeah. If I'm right. Yeah. So if I just ask you, 24 years back, the day you have started your journey, the first day in the profession, and now there's a lot of maturity came, a lot of things changed. But like still when we shoot with senior officers like you, sometimes we also work hard how you will feel or the other. Do you have that hesitation on that first day? Yep, it's true that hesitation is always there, because you never know that how the person before will react. Yep. And in bureaucracy, there is the idiosyncrasy is the rule. Okay. So you have to be preemptive, or you have to be you have to actually very alert, particularly in discipline force, that what you are going to utter and what your boss is going to say, what you are going to perform and what your boss is going to tell you. Not only that, when you meet people, because it is people's job also. It is not only you have not only to report to your seniors, unlike army. You are answerable to the people also. Exactly. So while handling people, you have to be different. While handling politicians, you have to be different. While handling press, you have to be different. While handling your own colleagues and subordinates, you have to be different. And while handling other department colleagues or other department people, when you want to have a coordination with them, then you have to be different. But your basic tenets should always be the same, that your principles should be the same, your ideals should be the same. The cardinal principles of civil services shall not be forgot. It should not go into oblivion. The cardinal principle of civil services should always be there in the back of the mind, and for our every work, that should be the criteria, that should be the parameter. Any experiences, sir, like if you can share, like your starting days when you used to meet your seniors, how was it? Or your first case handling, if you can share any experiences. Like I want to ask, like any memorable experience which still reminds you. My first day in the service, or so far anyone's first day in the service, is in the training NPA. training center. That is, for our case, it is SBP NPA, Okay. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy.
And initially what happened, you don't know many of them because I had not completed my foundation course with most of them. I was an alien for them, for most of the officers trainees. And when from the very first day it starts with the introduction of different clubs and different societies, different officiating jobs for the probationers or the officers trainees. So when I, in my over enthusiasm, when I thought I should be there for these, so I was pulled back by the groups who were there since 3.5 months of foundation. So they said, you cannot stand for this club presidentship or that club presidentship. You should withdraw. You have not experienced the earlier training, which was 3.5 months at Mussoorie, at Labashna, Lal Bahadur Shastri Academy of National Administration. So you should not. So I withdrew, but I feel bad, and but I was patient, of course, and for the mess club secretary post, they have elected me anonymously. They have proposed my name after 6 months. They have proposed my name and they have elected me anonymously. So it happens. So you can change their views. And when later on I did the foundation course, though I never bidded for Spirit de Corps award, I won the Spirit de Corps award. They all voted for me. And those who bidded for that, they couldn't get that. So it happens that you should be calm and composed, and you should be doing whatever is good for one and all. The people support you. हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया. Do you see any changes right now, like your time bureaucracy and the youth coming into bureaucracy right now? Because many officers are being trained under you. Is there any changes happening? One thing I have seen that earlier also the IITians used to come, but nowadays they are doing IIT, IIM. They complete their service tenure of 3, 4, 5 years somewhere in a good place, and still they come back to the civil services. This is the beauty of the civil services, I think. So, but which attracts the people who are earning loads, and still they leave that job and they come over here. So they want to be the change makers, and they are coming with some conviction. That's why they are coming over here, I feel so. So there is not much change, but this change I have seen that people are coming after doing long tenures of service and other plum jobs of engineers, doctors and all. Though in our period of time they were also competing, but they used to start attempting for this exam since beginning. Here we have seen that they first join their jobs and then come back for the civil services. That is what I have seen. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared.
aftermath. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. So sir, the first thing like being a police officer, हर interview के यही सवाल होता है कि about always with the crime, political pressures, how daily policing goes on. If I ask you, what do you miss the most that people miss you asking you? Whenever people ask about all these things, these are part of my job and I find it interesting to reply. But I miss if they don't ask about my soft part, because people who are more sensitive towards others are better at administration, because they know what actually is happening with the person, and that's why they can take a stronger action against the culprits. So people think many a time that why I should be, after listening poem of a daughter bereft of her father, I sobbed into tears. So everyone called me up and they said ki we never expected that you should sob into tear. So I said, what is wrong in this? If I am sensitive towards others' suffering, it means I am strong towards the wrongs, and I will be doing my service more passionately. So my passionate part is not contradictory. My poetry writing or my passionate talkings or motivational talks are not contradictory to my work, which many people think that it is. So sir, you said about two things basically, your emotional aspect and the stereotype of being daily policing. So don't you think somewhere we need to break it to actually analyze a person, because हम एक वो justify कर लेते हैं दूर से? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि स्टीरियोटाइपिंग से हमें बाहर निकलना पड़ेगा. जब हम स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं एक पुलिस वाले का या पुलिस महकमे का, तो उसका परिणाम ये होता है कि हम उससे एक ख़ास चीज़ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, एक्शन. पर एक्शन तो होगा, लेकिन एक्शन के पीछे इमोशंस का होना ज़रूरी है. एक्शन एक्सपेक्टेशन ऐसा ना हो कि उस एक्शन के चक्कर में आदमी पुलिस वाला ही क्राइम करने लग जाए. ठीक है, वो उस दिखाने के चक्कर में वो झूठी इनकाउंटर्स दिखाने लग जाए या झूठे तौर तरीके दिखाने लग जाए. सो मेरे एक्शन में भारतीय संविधान का और लोगों की भावनाओं का, लोगों के जज्बातों का हमेशा समावेश होता है. तो स्टीरियोटाइपिंग से निकलने के लिए दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं. जैसे क्रिमिनल को केवल क्रिमिनल नहीं समझना पड़ेगा, क्रिमिनल को के क्राइम के पीछे जो सामाजिक कारण हैं, जो पारिवारिक कारण हैं, जो आर्थिक कारण हैं, उनकी तरफ भी हमें मुड़कर देखना पड़ेगा. जो मानसिक कारण हैं उनकी तरफ भी मुड़कर देखना होगा. तब हम केवल नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे, तब हम केवल आपको कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं देंगे या फायर फाइटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे लॉन्ग टर्म में उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे. उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि मैं आज से लगभग 20 साल पहले
मालेगांव का एडिशनल एसपी बना। तब मालेगांव में हर साल दंगे हुए करते थे हिंदू मुस्लिम के, और मेरे जाने से ठीक पहले एक बड़ा भीषण दंगा हुआ था, और इस दंगे में 14 लोग मारे गए थे और कई इबादतगाह, धार्मिक स्थल जमींदोस्त हो गए थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच घृणा इतनी फैल गई थी कि वो दोनों इंसान हैं, उन दोनों को साथ रहना है वहाँ पर, ये वो लगभग लोग भूल चुके थे। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के इलाके में जाने से डरता था, जबकि वो बुनकरों की नगरी थी जहाँ ताना और बाना हिंदू और मुसलमानों से जुड़ा हुआ था। जैसे ग्रे क्लॉथ मर्चेंट सारे हिंदूज़ थे, जैसे चेकर्स सारे हिंदूज़ थे, जैसे सप्लायर्स सारे हिंदू थे, लेकिन जिनकी लूम्स थी वो सारे मुस्लिम्स थे और मज़दूर सारे मुस्लिम्स थे। तो वहाँ ड्रॉप ऑफ द हैट पे हो गई और दंगे हो जाया करते थे। फिर मैंने उन कारणों को ढूंढा कि ये दंगे क्यों होते हैं। मैं उन लोगों के बीच गया, मैंने मराठी सीखी, मैंने उर्दू सीखी और उनसे बातें की, उनसे समझा, वेश बदल कर उनके बीच गया, उनके अंदर क्या चल रहा है ये मैंने समझा और फिर उसके अनुसार उनको जोड़ने की कोशिश की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ की महानगर पालिका जो एक्सट्रीम फोर्स के द्वारा, जो जनता दल सेकुलर करके एक पार्टी हुआ करती थी जिसमें के निहाल अहमद अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका ग्रुप था महानगर पालिका में। उन्होंने, और पंचायत समिति में शिवसेना और भाजपा का वर्चस्व था, उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी जगह सर्वसम्मति से ठहराव करके, ठहराव का अर्थ होता है रिजोल्यूशन करके, प्रस्ताव पारित करके मेरे कार्यों का अभिनंदन किया मेरा जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। तो ये बदलाव आने के बाद, उसके पहले एक पैम्पलेट के फटने से जो उर्दू में लिखा हुआ था बी इंडियन बाई इंडियन, और फाड़ने वाला एक एसआरपी का कर्मचारी था, स्टेट रिजर्व पुलिस का, लेकिन इसके बावजूद दंगे हो गए उस मुद्दे पर जिसमें कि 14 लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद 2 बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए और वहाँ पर कोई दंगे नहीं हुए। बॉम्ब ब्लास्ट के बावजूद लोग, हिंदू मुस्लिम, एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आ रहे थे। और आज 20 साल हो गए, जहाँ हर साल दंगे हुआ करते थे वहाँ 20 साल से एक भी दंगे नहीं हुए। तो आपको समस्या की जड़ में जाना होगा, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर आपको काम करना होगा। उन समस्याओं को समझने के लिए लोगों के बीच जाना होगा। आप बर्ड आई व्यू से सब कुछ नहीं समझ सकते, आपको वर्म आई व्यू भी चाहिए कि वहाँ उन पर क्या गुजर रही है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, उनके यूथ की एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है। उनमें जो टकराहट के मुद्दे हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल टकराहट का एक मुद्दा था कि क्रिकेट के मैच में, इंडिया अगर पाकिस्तान का मैच हुआ तो हिंदू और मुस्लिम लामबंद हो जाया करते थे। जब हमने देखा कि जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं मुस्लिमों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हारने के बाद मस्जिद के बाहर जाकर नारे लगाए जा रहे हैं, और दूसरी बार पाकिस्तान के जीतने के बाद कुछ बच्चे पटाखा फोड़ रहे हैं दूसरे समाज के, दूसरे धर्म के, इतर धर्मीय लोग, तो मैंने मीटिंग बुलाई। पहले मस्जिद के ट्रस्टियों की, मस्जिद के उलेमाए किराम की, और उनसे कहा कि इस्लाम धर्म में वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है। हम जिस मिट्टी में बढ़ते हैं, जिस मिट्टी से हमें बनाया गया है और जिस मिट्टी में हम मिल जाएंगे और क़यामत के दिन जिस मिट्टी से उठाए जाएंगे, उस मिट्टी के प्रति हमारी श्रद्धा का होना, हमारे प्यार का होना ज़रूरी है। इस्लाम धर्म में फिजूल खर्ची अमल में नहीं आता है, मतलब फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। फिर ये पटाखे फोड़कर कुछ लोग, चंद लोग पटाखे फोड़ते हैं और पूरी कौम, पूरे हिंदुस्तान की कौम बदनाम होती है। क्या ये उचित है? तो उन लोगों ने अगले जुम्मा की नमाज पे वाज किया, मतलब उपदेश किया उनके उलेमाए किराम ने कि कोई ऐसा नहीं करेगा, बोर्ड लगाया, और जो करेगा उसको फाइन किया जाएगा।
आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हिंदुस्तान की टीम जीती पाकिस्तान के खिलाफ, उस समय सीरीज चल रहा था, तो मुसलमानों ने फ़ोन करके कहा कि देश के लिए उत्सव मनाना देश की जीत पर फिजूल खर्ची नहीं है, इसलिए हमें जल्लोश करने दीजिए। और मैंने फिर कहा बेशक आप करिए। वैसे ही दूसरा मुद्दा था जो ईद उल जुहा में गोकुशी करते हैं, उसका मुद्दा था। तो हमने उनको समझाया कि इस्लाम में, और इस बात को लेकर दोनों धर्मों के बीच काफ़ी तनाव पैदा हो जाया करता था, तो हमने उनको ये समझाया कि जो चीज़ कानून में नहीं है वो आप मत करिए, कानून में जो है आप करिए, अगर आपको कोई रोकता है तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे, पर कानून में जो नहीं है, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई भी अगर कानूनन जो अलाउड नहीं है वो करेंगे तो उनको हम अपने समाज से भी निकाल देंगे और 10,000 रुपये का फ़ाइन भी करेंगे और पुलिस को सुपुर्द भी कर देंगे। तब से वहाँ ये तनाव भी ख़त्म हो गया मालेगांव। सो इस तरह के जो डिफरेंट तनाव थे, जो ताना बाना था, जो टूट रहा था, उसे ख़त्म करने के लिए मैंने अलग अलग, जैसे कवि सम्मेलन और मुशायरा सम्मेलन एक साथ, दोनों के लिए कॉमन फीलिंग्स थी। वहाँ पर सॉटी वॉलीबॉल एक पॉपुलर गेम था, तो हमने पूरे महल्लों में सॉटी वॉलीबॉल बंटवाए। वहाँ पर एक तहरीक मतलब आंदोलन हुई थी, जिसमें कि करीब करीब 20-22 दिनों तक लगातार सैंडबैट के खिलाफ आंदोलन हुआ था। उस समय लोगों के पास, मज़दूरों के पास, आंदोलन तो बड़े लोगों ने कर दिया, व्यापारियों ने कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कर दिया, ट्रेडर्स ने कर दिया, लेकिन बेचारे गरीब मज़दूरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने गाँवों से इकट्ठा किया अनाज, लोगों को अपील किया, तो हिंदू लोगों ने अनाज दिए और हमने मुसलमान मज़दूरों के पास वो अनाज पहुंचाए घर घर जा कर के। तो एक ऐसी भावना तैयार हो गई ऐसी कि उसके बाद से एक दूसरे से नफ़रत लगभग ख़त्म हो गई। कुछ टकराहट तो जहाँ 10 बर्तन होंगे, जहाँ डिफरेंट लोग होंगे, जहाँ डेमोक्रेसी है, तो टकराहट तो कुछ होगी, लेकिन नफ़रत की जो भावना थी वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से हमने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, और इसके लिए हमने प्रत्येक विद्यालय के जो कल्चरल टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर थे, एनसीसी टीचर थे, एनएसएस टीचर थे, उनको इन्वॉल्व किया, और हर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में जिसमें कि तनाव हो सकता था, उसके पहले या राष्ट्रीय पर्व में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जयंती, इन सब में हमने उनकी, फर्स्ट में हमारा महाराष्ट्र दिन, तो इन सब में हमने उनके द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन करवाया, उनको शासन मित्र की पदवी दी, क्योंकि ऐसे लोगों के वो इन्फ्लुएंस में रहते हैं बच्चे, तो वो बच्चों को जैसा सिखाएंगे बच्चे उस आधार पर प्रभावित होते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग समय अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। अगर अपराध रुकना है तो केवल डंडे चलाने से नहीं रुक सकता। हमने डंडे भी चलाए हैं, ऐसा नहीं, जहाँ पर अपराध हो रहे हैं वहाँ डंडे भी चलाने पड़ते हैं, गोली भी चलानी पड़ती है, लेकिन अपराध होने के पहले उनको प्रावृत्त करना, उनको उससे दूर करने के लिए उनके मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में सही चीज़ को बिठाना ज़रूरी है। और ये कोशिश मेरी हमेशा से रही है, चाहे वो फांसे पारधियों का पुनर्वसन हो, भिल्लों का पुनर्वसन हो, बुल्ढाना ज़िले में, अमरावती ज़िले में, सांगली ज़िले में, चाहे वो जो ये स्ट्रीट बेगर्स का जो चिल्ड्रन हैं उनका पुनर्वसन हो मुंबई, साउथ मुंबई में, चाहे वो हमारे यहाँ के जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं बड़े पैमाने पर, यहाँ पर उनका पुनर्वसन हो। तो इन सब के लिए, या फिर जो यहाँ पर लोग बेगिंग कर रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर, इन सब के लिए मेरा व्यू ये होता है कि वो केवल उनको सज़ा दिलाना काफ़ी नहीं है या उन पर कार्रवाई करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है स्थायी समाधान के लिए कि हम उनको अब मुख्य धारा में जोड़ें और उनको वहाँ से, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई उपाय
उन्हें दे, और ये मैं हमेशा से देता रहा हूँ। लोग मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग जिसे कहते हैं उसका मैंने अच्छा उपयोग किया है हमेशा, और उसके लिए लोगों को इन्वॉल्व किया है मैंने हमेशा। मतलब केवल हमारी तरफ से हमने कार्रवाई नहीं की है, बल्कि स्थानीय लोगों को जोड़ा है, इसलिए कि वो दूर तक चले। ऐसा नहीं हो कि हम गए और उसके साथ ही वो पॉलिसी ख़त्म हो गई, ऐसा ना हो। हमने उसको स्थायी करने की कोशिश की है, और उसके लिए स्थानीय एनजीओ को सेतु का काम करने दिया है। दे आर वर्किंग एज अ ब्रिज। मैं वहाँ काम करके निकल जाता हूँ, एंड दे कंटिन्यू डूइंग द सेम गुड वर्क विच आई इनिशिएट। I just want to connect the same question related to this. So, what you basically saying, the different aspects of policing connecting to religion, community, and different aspect. So, what about the human mapping? You need to understand when you like to see various amount of people sitting in front of you, coming with different aspects. What the first aspect you see, looking at them and seeing at them, because that's a huge learning for police. मैं नहीं पलटता बेजान किताबों की और आँख, मैं वो पढ़ लेता हूँ जो चेहरे पे लिखा होता है। Okay. अच्छा. So like this is a learning you have learned from policing, or like this happens only with policing? Expected. If you are sensitive, if you are having wisdom, if you have no ego, then you learn from policing. What you would have learned about me seeing after so many times? I can say कि you are very positive. You always think the positive side of the things and not the negative side of the things. Your smile, your appearance, your body language, as well as your questions were never reflecting any negativity. So that I can say for sure, you will always be positive towards one and all, and that is good. Thank you so much, sir, for giving this time and opportunity. It was a pleasure to have you in the session. Thank you.